Okay, students, so page number 71, and today we will complete our chapter 3. It's Code Vidya. Okay, so all you have to open your Code Vidya book, your computer book, and chapter number 3, page number 71. And topic name is last one is exporting files. Means if you want to export some file in your presentation, how you can do that. So today we will learn that thing. Okay. So first of all, you can convert your presentation into different kinds of file in PowerPoint. Next, first make sure you save the presentation you are working on default format. So if you want to export your file, so what you have to make sure it's already saved in presentation form, then only you can export. Means आप अपनी फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल को कहीं और किसी और फॉर्मेट में अगर सेंड करना चाहते हो, for that we are having exporting file. So first of all, save your presentation in presentation format, means in PPT extension, with PPT extension. Next, open the export option by clicking file export. तो कैसे export कर सकते हो? We have to click on file option. Okay, then click on export. From here you will see option to create PDF, XPS document, create a video, package presentation, CD, create handout and change file type. Means हमारे पास different type की options available हैं, and the one you want to save, in which format you want to export, just select that option and click on Save as dialog box button with the same option at the bottom. By default, if you export your presentation as a PDF, the PDF will simply be a collection of slides with one slide per page. If you click option, another dialog will be pop up. From here. You can select which slide to export and what to publish. Means अगर आप simple PDF पे select करोगे तो आपकी सारी presentation वन बाय वन पर स्लाइड पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी. बट एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप किस स्लाइड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो. द हैंडआउट ऑप्शन विल डिस्प्ले अप टू 9 slides on a page, which is great if you want to print copies of presentation without killing an entire forest in the process. The outline view will be created just with that PDF with an outline of presentation. Each slide will be shown as a header with bullet points to shown as subhead. So अगर आप उसको with this option export करते हो outline view, तो आपके PDF में एक outline भी cover हो जाएगी with header option. Okay, so here are some options available, outline view, etc. Click OK when you are done and click publish to create PDF. Make sure you save the presentation you are working on default format at way. Otherwise, if anything goes away, you can always come back to your saved copy. Means अगर आप कभी भी अपनी presentation को export कर रहे हो, before that you have to make sure you have saved your file in original format and you are saving. If Rishabh, what happened beta? Any doubts? Devkaran, if you are not having book, you can just see from here. Okay, everything is visible in front of you. So now we will do the practical. How we can do? We will go into PowerPoint, click on PowerPoint, and we will open some files if available here in this PC. Okay, so suppose this is the presentation we are having. Okay, so this one is not here. We will try to open something else. Presentation. Okay, so suppose this is the presentation we are having. First of all, we have saved this presentation. Now we want to export this presentation. How we can do that? Come here in file option. Okay, in file option there is an option available export here. Just click on this export. Now जैसे आपने export पे click किया, see different options are available. Create PDF, create a video, create as animated GIF. मतलब बहुत सारे options आपके पास available है. So whatever you want to choose, you can go with that. Suppose हम ये कर रहे हैं create PDF and XPS. Okay, so you will click here create PDF and XPS. तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया, सी यहाँ पे
आपके पास ऑप्शन आ गए कि आपको कैसे सेव करना है। तो हमको सेव करना है एज PDF। अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें तो वी कैन चेंज दी नेम ऑल्सो। सो इफ वी आर गोइंग टू राइट हियर export file. Okay, so if we have done, now we will click, see, optimize for standard publishing online and printing minimum size publishing means different option। अगर हम ऑप्शंस में भी आएंगे, so publish pub, कैसे आप पब्लिश करना चाहते हो, स्लाइड्स में, हैंड आउट में, नोट्स में या आउटलाइन व्यू में। तो अगर हम आउटलाइन व्यू करेंगे तो उसके साइड में एक बॉर्डर भी आ जाएगा, ठीक है। So whatever is written in the book, only that thing we are doing here. Okay, so everyone have to check each and every point written in your book, and then you can see the practical, then it will be very easy for you to implement. Okay, so point by point we have just check here. तो अगर यहाँ पे तो अभी all आ रहा है, ठीक है, all। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्लाइड के लिए करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम हेयर। स्लाइड मीन्स कहाँ से कहाँ तक आपको करना है, 1 से 2 या फिर सारे करने हैं या फिर कुछ कस्टम शो करना है। सो ऑल दिस ऑप्शन, अगर आप सारे का करना चाहते हो जस्ट सिलेक्ट ऑल, ठीक है। फिर पब्लिश किसके लिए करना चाहते हो, स्लाइड्स के लिए, हैंडआउट्स के लिए। सी हियर इट्स रिटन हियर, everything is mentioned. The handout option will display up to 9 slides on a page. मीन्स हैंडआउट ऑप्शन में क्या होगा, अगर आप सिंपल करोगे तो एक PDF पे एक ही स्लाइड आएगी, ओके। बट हैंडआउट करोगे तो एक PDF में 9 स्लाइड्स आ जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आउटलाइन व्यू, तो इसमें क्या आ जाएगा, PDF के साथ साथ एक आउटलाइन भी क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? सो इफ वी आर गोइंग विद दैट आउटलाइन ऑप्शन, सी व्हाट हैपेंड, all outline view and okay. So we have clicked okay and then click on publish. See, जैसे ही आपने okay किया, आपकी presentation किस में आ गई, PDF format में आ गई। Okay, so if you are having any presentation in your system and if you want to send to me or anyone in PDF format, so in this way you can send your PDF, send your presentation in PDF format to anyone. Okay, is it clear, students? Any doubts, anyone? Okay, so next we are having so our chapter is completed today. Now it's time to do some assessment. Now tell me, students, any doubt?